बीफिंग है और बहुत सिवियर किस्म की बीफिंग है. मैं भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहा हूँ. लेकिन कभी पुलिस वालों ने पकड़ा? नाइस. हाँ, पुलिस वालों ने पकड़ा. पुलिस कोई वालों ने कहा experience? स्टेशन चलो, आओ पेंट करके आओ आते पेंट हैं. Present around BBRC, if you remember, Body Beat Recreational Center, and that's where Neil and Vernon used to teach parkour and free running. And I was like, I used to fangirl over them, like, oh God, these guys are so awesome, and I want to flip like them. And Who's the Rebel 2.0? Who's Rebel 2.0? Very good question. वो murals के ऊपर focus कर रहा हूँ. Because that is something कि वहाँ पे जो है you have this intricacy. Every other artist, my family is very supportive for this art form. They have been treating me like a diamond since childhood. और हमेशा उन्होंने इतना support किया. They were like always have my back and everything. इतना हमारा जोर है. वैसे लाहौरी लड़का बैठा हुआ है हमारा. अभी तो यहाँ है ना कराची में. बताइए गलत रास्ते नहीं. बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. फाइनेंस करना चाहिए. वॉइस प्लेड वेरी वेल. अम्मार को तो पसंद आ जाएगा यार. ये उन्होंने खुद ही दे दिया फीडबैक कि ये लव शो मैं करता हूँ इन रिटर्न फॉर तो दिख रहे. This is hip hop. Faizan Sheikh Rebel. Nice. Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the show EncycloMedia NSN. क्या हाल है? सर फिट फाट. सर आज हम असल हिप हॉप की दुनिया में आ गए. yes going back to the roots और एक different elements है which is very new by the way. ये हमारे पहले ऐसे गेस्ट होंगे जो एक हिप हॉप के different elements आते हैं. That is graffiti and he is one of the OGs in the graffiti community in Pakistan. Faizan Sheikh aka Rebel. How were you my G? कैसे हैं आप? अभी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं. सॉरी आप बना क्या रहे वैसे? इतनी देर से ड्रॉ कर रहे थे. स्टूडियो में मैं आया था. मेरे पास टाइम था, मेरे पास पेन था, मेरे पास पेपर था और एक दोस्त की फरमाइश थी कि एक नाम लिख दे. मैंने कहा चलो ऐसे ही उनके लिए कुछ लिख लेते हैं. सो बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू बाय द वे लिखा हुआ क्या है? अमार. अच्छा अमार. कैमरा सर. अमार गया हुआ अभी बाहर. सही है. नाइस यार. आप कैरी ऑन कर सकते हैं, हम पॉडकास्ट को थोड़ा सा देख लेंगे. नहीं आप ड्रॉ करते रहे, हम बात जवाब प्लीज आप कंटिन्यू करें. तो सर आप पहले ये बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल. आज का रूटीन क्या चल रही है? रूटीन जॉब ग्रेफिटी घर जॉब ग्रेफिटी. सही है. यहाँ पेपर पेन मिले मतलब यार ये एक अलग किस्म की मतलब चीज है यार. स्लीप ग्रेफिटी रिपीट. Exactly, it's like that. And work too. I work too. Plus. अच्छा फैजान भाई मतलब पीछे चलें. हाँ चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं. वैसे नहीं सीरियस लाइक अभी सिंस वी नो कि यार आप बड़ा बाहर शार घूम के आए लाइक इट वाज अ ह्यूज ऑफ एक्सपीरियंस. तो लाइक देयर इज वी बोथ कैन सी अ डिफरेंस इन यू. लाइक देयर इज अ लॉट कि एक ट्रांजिशन भी है भाई. बाल लंबे भी थे, बाल छोटे भी थे. खैर ये तो सिर्फ लोगों के लिए बताने के लिए मेटाफोरिकली. लेकिन असलियत तो क्या है कि यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी और माशाल्लाह यू चेंज. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एज वेल. तो उस तक पहुंचने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम द जर्नी ऑफ फैजान शेख. कि भाई फैजान शेख AKA रेबल हुआ कैसे? लाइक वी वुड लव टू नो कि स्टार्टिंग विद द इन डेप्थ क्वेश्चन कि हु इज दिस पर्सनालिटी इज. Okay, so it's like every artist they are born sensitive to things that people don't really accept within their thoughts, right? They don't give an account to those things, those feelings, those emotions probably. So what happened was that I used to be a very avid game player. I used to be a video gamer back in my childhood, and in that I used to find this element of graffiti laid out everywhere, and it was something that inspired me. It was so complicated, but it was so beautiful.
it was like life to me, just how life is. It's freaking complicated, it's freaking beautiful. So that's how I got into graffiti. My first inspirations came from movies and video games specifically. And then I started practicing this. At that point in time, I did not even know that this could be a career. This could be something that could be a lifesaver. This could be something Especially in that could be a Pakistan. therapy. Yeah, it's a lot of things, to be honest. So that's how I got into graffiti. And then उसके बाद जो है, all I did was like कि मैं इसी तरीके से जैसे अभी नाम लिख रहा हूँ, ऐसे ही मैं back in 2006, 2007 नाम लिखा करता था अपने दोस्तों के. और उसमें बहुत सारे मेरे हिप हॉप के दोस्त होते थे, स्पेसिफिकली रैपर्स, ब्रेक डांसर्स उस टाइम के. तो उन लोगों के लिए जो है वो अच्छा, करना. वो होते भी उस टाइम मतलब आप गिनतियों के थे, मतलब गिनती में आप गिन सकते थे उन्हें. बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री थी, बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री थी. सारे क्रूज एक दूसरे को जानते थे, सब लोगों की आपस में बीफिंग भी होती थी, सब लोगों के फड्डे भी चलते थे, लेकिन सब लोग जो है वो अपने काम भी कर रहे होते थे. दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड इट वाज समथिंग दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कल्चर बैक एट द टाइम. इट वाज समथिंग दैट वाज कंसिडर्ड taboo, to be honest. और उसके बाद फिर this became the vibe. 20 years down the road, 10 years down the road, you see this is the vibe. That's the thing. This is what we were making the future. We were not predicting it. We were making it. Exactly. All everybody in different paths and you know just growing into that. क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, इंडस्ट्री को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम. नाइस. ऐसा ही है. So yeah, since we heard like you know you continued from there, and I think everybody remember their first wall. Yeah. So we would love to know which first wall was yours, and how did you get there to achieve that? Okay, so one of my first walls was actually just a bombing piece, and it was like it was my summer vacations in college, and I was like, you know, I was just. It has been 1 year since I've been writing these names and everything, and I had played that game called Mark Echo's Getting Up, if you know of that. It's Mark Echo is basically an artist who turned into a merch seller and everything, but there is a name and there's a game in his name. Okay. It's called Mark Echo's Getting Up. And in that game, you spray paint over the walls and everything, and it appealed me like anything. So I asked my dad to get me a few cans. I'm so sorry. I need No problem. Oh, it's fine. So I asked my dad to get me some cans, and back at the time, it was like, even back at the time, it was worth 500 rupees, right? For 3 or 4 cans that my dad got me. Or uske baad I got out, started bombing, and you know, I bombed the whole neighborhood. There was just one name on the walls, and that was Rebel. Other than the political graffiti or something that you see on the walls. Yeah. What you find is the fact that there's some colorful piece of art that people are looking for the first time. Oh, अच्छा ये क्या है, ये क्यों है, ये कौन है, ये कौन सी दुकान है. ये कौन सी दुकान है? क्योंकि हम लोग वहाँ से निकले नहीं है, वो बंगाली बाबा. परफ्यूम चौक, पता नहीं क्या क्या चौक्स. ऐसे ही है. And that's where the beautiful version of that graffiti comes up on the wall, and people be like, ooh, okay, now this is something. This is something. And soothing है ना कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि यार ये is making this such an ugly place so beautiful. Like impact ऐसा दे रहा है कि people having a vibe. That's what graffiti does. तो please let us know more about it. कि फिर उसके बाद. So then I got into this thing. I got to know कि जी there are a lot of artists that are working around the country as well. आहिस्ता जब मैं इस चीज़ के अंदर आया तो probably बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया यार मेरे फला दोस्त का दोस्त ये काम करता है. And that's how I started getting connected. That was the first, you know, the baby steps into this hip hop world. I got to know कि अच्छा यार जैसे मैं ब्रेक डांस प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे माइकल जैक्सन बहुत अच्छा लगता है, मैं ब्रेक डांस प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है. तो वो 3 मोहल्ले छोड़ के एक लड़का रहता है, वो भी प्रैक्टिस करता है, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड देन व्हेन यू गेट इनटू द कल्चर, देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट दिस कल्चर के यू गेट द नॉलेज ऑफ इट. यू गेट इट्स नॉलेज. यार कितने एलिमेंट्स हैं, क्या रूल्स हैं, रिस्पेक्ट क्या होती है, बीफिंग क्या होती है, हाउ यू गो अबाउट, what keeps you fresh, how you add style to your work, whatever you are doing, and how all of those styles they come together to form hip hop. It's not just one thing, it's a whole culture that we're talking about here. So you get that knowledge. और फिर वो knowledge sharing आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं
जो उसको समझते हैं। एग्जैक्टली। एट दैट पॉइंट इन टाइम कोई रैपिंग को नहीं जानता था, कोई हिप हॉप को नहीं जानता था, किसी को ग्राफिटी का तो पता भी नहीं था। आज भी लोग बहुत ज्यादा, ग्राफिटी इज एन एलिमेंट दैट आई स्टिल फील इज मिसिंग, इट्स लैकिंग समवेयर। अच्छा, मोस्टली हमारे इवेंट्स भी होते हैं, तो इवेंट्स में भी बहुत कम दिखता था भाई यार वही ना, लाइक graffiti is an art of express to be, you know, to be around a wall or to be around, you know, something that lasts long forever. समझ रहे कि एक रिप्रेजेंटेशन है। अब जितने भी अभी ऑब्वियसली वक्त आएगा, लाइक और हॉबी भी होता ही रहता है, लाइक कहीं जहाँ पे स्ट्रीट आर्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा तुम्हें कभी मतलब you won't find T2F being, you know, like the streets of the, you know, the walls of the hood, एक कह सकते हो बात, एक इसको टर्म यूज़ कर सकते हो, वरना लाइक वहाँ पे भी अगर इसने, आई थिंक आई रिमेंबर यू ग्राफिटीड इन न्यूक्लियस वाले इवेंट में आर्ट कल्चर, तो वहाँ पे you got yourself a whole frame of wall, I think, और उसका साइज आई डोंट, it was 8x10 राइट। तो उस पे बेसिकली उसको यहाँ पे खेलने को मिला नहीं, वो यहाँ पे जब जैम के बाद पीपल वर लाइक लुकिंग एट इट, ही वाज मेकिंग इट, वहीं पे लाइव बनाई उस थ्रू आउट द जैम। नाइस। It was 1 hour. Wow. With the spray cans. See, that's the thing about graffiti. Like, you have to be quick, you have to be fast. The crux of graffiti is the fact that you have to make your message in a place where it is risky, where police can come up and catch you. Probably people don't like the idea. Probably it could be political. It could be anti-social. It could be any of those कैसे आता है? things. मतलब आप इतने क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं? लाइक ऑब्वियसली एकदम फॉरन आइडिया लेकर आना। Spontaneous. It's all about this thing. It's all about practice. It's all about making your sketches. And this is what I have learned from the artists who have been practicing. I mean, you asked me about a change that came into me, right? About all of that. So what happens is that कि जी आप जब ये देखते हैं ना कि यार एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, एंड ही इज क्रिएटिंग अ न्यू आर्ट पीस एवरी सिंगल डे, तो दैट एड्स टू योर वोकैबुलरी, ठीक है, दैट एड्स टू योर वोकैबुलरी, एंड देन यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट. आई मीन, नाइस. you can make things spontaneously, just like you can make beats spontaneously, just because you have been listening to a lot of it. So it's a lot of input, and then it's a lot of output. It's a lot of practice. So you have to invest your time in it. You don't get good over days, man. Overdose. You know that better than anything. बिल्कुल नहीं, I agree with the point कि भाई consistency is the key to everything. अच्छा, इन हिप हॉप, मतलब हिप हॉप की जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो ग्राफिटी कितना इम्पैक्ट मतलब होता है उसका, लाइक Okay, so what used to be in history where hip hop actually started was the fact that there were rappers, but they were doing their thing within their own community. They were break dancers, they were doing that thing within their own community. DJs, they were doing their own thing. But again, it was in the community itself. What graffiti was, graffiti came up to the public, to everyone. It was the, you can say, the symbol, the noise of a hip-hop culture being developed. So that's what graffiti did. Basically, graffiti is representation of your own culture values, your expression of, you know, who you are, basically. So it speaks the loud of when you become part of a hip-hop community, you express yourself, you basically make something about it कि भाई this is who we are and this is where we come from. और सबसे मज़े की बात ये है कि hip hop is pretty international, it's for everyone. तो it followed out and infused with every culture that it came to. तो पाकिस्तान का flavor of hip hop is very different. Even the graffiti style is different, the way we represent. अगर आप throughout music देखो जिस तरीके से grow किया है, it's because of their own originality, like people that have come out now. पहले जो था कि नहीं इसके हिसाब से चलना है, we had kind of a mix morals and values कि नहीं यार ये इंडिया का वैल्यू है, ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया में होता नहीं, लाइक यू नो देयर लाइक पाकिस्तानी हिप हॉप इज बीइंग गोइंग फॉर लाइक मोर देन आई डोंट नो 1985 या आई डोंट नो इफ वी फिगर आउट मोर पीपल दे माइट बी डूइंग समथिंग. सबका अपना अपना एक इम्पैक्ट रहा है थ्रू आउट एंड सो ब्यूटीफुल इट टर्न आउट के इट्स फाइनली इज कमिंग टू अ बीइंग. तो अब यही है कि इफ इन अ रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एक बड़ी ख़तरनाक बात करने जा रहा हूँ, तो कि यू नो व्हेन इट कम्स टू रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हर दौर में कम्युनिटी बिल्डिंग हुई है फॉर अ नैरेटिव. Exactly. और उसी तरह ही से कि उन लोगों ने अपनी एक आवाज़ उठाई कि भाई दिस इज़ हू वी आर, रिप्रेजेंटेशन एंड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. तो इस तरह से और लोग भी हैं, लाइक इफ इट्स हिप हॉप कम्युनिटी फाइनली इट केम टू इनटू बीइंग, अभी भी स्टार्ट इट्स जस्ट बेबी
एक मेरा मतलब पॉइंट क्लिक हुआ है, लाइक आता रियली सॉरी, जैसे अब ग्राफिटी में बात करते हैं, ग्राफिटी में बीफ का भी कल्चर है, मतलब लाइक Oh होता होगा, yeah, नहीं यार क्योंकि कंपटीशन तो एक होगा हुड कि होता है ना यार, hood चॉकिंग करना representation है, वहाँ तो जाके उनके एरिया में जाके आपने अपने नाम को या अपने बैंड को या जो भी है उसको एग्जैक्टली बीफिंग है, और बहुत सिवियर किस्म की बीफिंग है। मैं भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहा हूँ, लेकिन इट्स बेटर के हम लोग उन चीज़ों में ना जाएं। व्हाट आई फील टुडे वो एक बहुत चाइल्डिश ज़माना था, बहुत सारी चीज़ों के लिए। everybody was young. So everybody was beefing, सही मतलब है। it was like kind of the trend that day. Yeah. सही ठीक है, तो सब बीफ कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। है। नाइस। कि भाई यही है तरीका, तो ओके लेट्स डू दैट, तो सभी उसी में And घुसे it हुए was थे। something जो एक कंपटीशन होता है ना, फिर वो आपको चैलेंज करता है, और जब तक आप चैलेंज नहीं करते अपने आप को, तब तक आप जो है वो ग्रो नहीं करता। So it was good for us, it was good for the culture itself, it was good for graffiti itself कि यार एटलीस्ट चलो उसने बनाई है, अब मैं भी बनाऊंगा, अब उसने ऐसी बनाई है तो मैं ऐसी बनाऊंगा। So it goes that way. It's a healthy competition. It is a competition, and that is what makes you grow. Yeah. आप अपने आप को चैलेंज देते हो। Yeah. सही बात है। सही है। It's like that. That's very good answer. अच्छा, moving from that, let's talk about your a bit of, थोड़ा वापस लेके जा रहा हूँ। We can talk about ActOne. तो let us know कि how did you get there, और वहाँ पे क्या experience रहा, where did you get find the whole community over there, although it was just breaking, but it was a part of the experience. It was the part of the experience, and it was like one of the first things जो कि I used to be a breaker initially, to be honest. Okay. I mean, I was doing graffiti, I was doing this breaking, I was listening to Michael Jackson. That was like, Michael Jackson was my first inspiration towards coming towards this culture and everything. So उस वक्त के ऊपर मैं ब्रेकिंग करता था, मून वॉक मुझे बहुत अच्छी करना आती, तो मैं बहुत खुशी करता था। तो उसके थ्रू जो है वो मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे who were like पार्ट ऑफ द अर्ली UCs, जो हमारा UC कोड अननोन क्रू होता था, फिर कोड अननोन क्रू वो बना था लेटर ऑन। तो कुछ मेंबर्स उसके जो वो मेरे एरिया में रहते थे, और हम लोग साथ प्रैक्टिस करते थे। वी यूज्ड टू डू पार्कोर, वी यूज्ड टू डू फ्री रनिंग, और उसके बाद फिर ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग। तो उस सर्कल के थ्रू हमें पता चलता था, क्योंकि आजकल तो इंस्टा एंड एवरीथिंग एंड एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग, बट उस वक्त इतना आसान नहीं होता था। और आई मीन गिनती के 15, 20, 25 लोग थे पूरी कराची की पॉपुलेशन में जो ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे थे। आई मीन हाउ easy it is to find diamonds among coal. Yeah, true. तो that was the thing at that point in time. तो जी बस पता चला ActOne के अंदर जो है वो ब्रेकिंग इवेंट हो रहा है। अच्छा, और ब्रेकर्स भी हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, मतलब कराची में और लोग भी ये काम कर रहे हैं। That's how I got into it. वहाँ पे I saw all of these people, EXT, I mean Dwayne की beginnings, Kevin की beginnings, ठीक है। और वहाँ उस लेवल, उस वक्त के बीफिंग्स जो होते थे इन दोनों के दरमियान, उस वक्त के क्लैशेस, और फिर EXT के साथ एसोसिएटेड एक ग्राफिटी आर्टिस्ट होता था, एक पार्कोर और फ्री रनर आर्टिस्ट होता था, वर्णन एंड नील, आई एम टॉकिंग अबाउट। GXP90 के नाम से उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है। एक वीडियो है 30 सेकंड की जिसके अंदर वो पार्कोर कर रहे हैं, और मैं उसको बैठ के देख रहा हूँ, और एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा देख रहा हूँ, नॉट लाइक टुडे, 50 दफ़ा मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, यार these guys are actually practice this thing. तो that's how I got into like ActOne के अंदर आया, वहाँ पे पूरा कल्चर मिला। I started breaking with all of those guys. बहुत सारी अपनी हड्डियाँ तोड़वाई हैं, बहुत सारी फ्लिप्स की हैं, बहुत मज़ा किया है when it came down to breaking and everything. Probably. What was your b-boy name? My name was B-Boy Rebel. It was Rebel. Rebel since day one. Okay, that's how it is. Oh, सही है. Rebel since I turned 16. I gave myself this name, and probably I live up to it. Probably I live up to it because, people who are who know what I'm going through, who know my stories, they know there is a huge difference between these two people that I'm telling you about. So, nice. अच्छा, आपने रिसेंटली रेडबुल के साथ भी कैंपेन में काम किया था, तो उसका एक्सपीरियंस बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Yes, Redbull. So breaking, फिर से शुरू, ठीक है। ब्रेकिंग Redbull BC One, ठीक है जी, the best event, the इंटरनेशनल जैम जहाँ पे बेस्ट ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड आ रहे हैं, आपकी इंस्पिरेशन जी, आप ड्रीम ट्रू दैट, यार कभी रेडबुल होगा मैं ब्रेकिंग करूँगा उसके अंदर जाके, लाइक, एंड इट्स समथिंग जो हर किसी को अवेलेबल है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है, आपके UAE के अंदर हो रहा है, एवरीबडी हैज़ द एक्सेस टू इट, बट पाकिस्तान नहीं जी, नोवेयर। और क्या कर लेंगे 25-30 लड़के? आई मीन व्हाट कैन दे इवन डू?
एटलीस्ट नाम भी आना बहुत बड़ी बात थी, मतलब ये एग्जैक्टली हम लोग मतलब सोचते थे यार, मतलब हम लोग तो कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा अपने आप को फील करते थे, वी कुड बी लाइक यू नो इट्स समथिंग अनअचीवेबल, इट्स इम्पॉसिबल। और अब 10 years डाउन द रोड इवेंट्स पे इवेंट्स हो रहे हैं जी, आप ब्रेकिंग जो है अब वाइब बन चुकी है, हिप हॉप अब वाइब बन चुका है, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे जो है वो ग्राफिटी एक्सपीरियंस, it was like, again, it was a dream, and it was a dream come true. Same. I cannot forget the day. I cannot forget how happy I was. I cannot forget as an artist how big of a goal this was for me. I mean, मैं उस नाम के साथ एसोसिएट होना, I feel honored about it. And being one of the people who actually added value to the culture, that is something that I feel कि जी यार ये एक अच्छा काम है कि हाँ, I'm still contributing, I'm still representing, and that is all that matters when it comes to hip hop. You gotta represent your culture, you gotta be there for it. तो लाइक रेड बुल का सपोर्ट कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में? रेड बुल का सपोर्ट पॉजिटिव है, इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ठीक है, अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, यहाँ पे कितने दीवाने मौजूद हैं, यहाँ पे कितने खपती मौजूद हैं, हम लोग जानते भी नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन टू डू, ट्रेजर हंट जारी है, इंडस्ट्री मेकिंग पे हम प्रोसेस पे हैं अभी, एंड अ लॉट ऑफ न्यू आर्टिस्ट दे देमसेल्व्स हैव कम अप इन द रीसेंट ईयर्स। बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए और बहुत अच्छा काम पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट डायमेंशन पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो ओल्ड स्कूल लेगेसी वो अपनी जगह पे है, जो ये न्यू आर्टिस्ट आके एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। A lot of B girls that have joined, a lot of new B boys that have come up with their own flavors, और especially Red Bull के बाद टफ होता जा रहा है। Red Bull के बाद अब लोगों के पास उम्मीद है जो हमारे पास थी नहीं। अच्छा फैजान भाई, लाइक पाकिस्तान में स्पेशली कराची में आपने कहाँ ग्राफिटी करी है लाइक, और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा, कितनी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं ऑब्वियसली ग्राफिटी करने में स्ट्रीट्स पे जाके? कराची, पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ग्राफिटी की भी है। कराची के अंदर जो है वो बहुत सारी स्पेसेस होती थी, कुछ ऐसी हैं जो अभी करंटली मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यू कैन फाइंड माय वर्क इन क्लिफ्टन एंड DHA वाली साइड के ऊपर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर आर्ट लवर्स ओवर देयर, चाय वाली साइड तरफ, एग्जैक्टली। सो यू कैन फाइंड माई पीसेज ओवर देयर। उसके अलावा यूजुअली जो मैं काम कर रहा होता हूँ, अब मैं स्ट्रीट आर्ट से ज़्यादा जो है वो म्यूरल्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ समथिंग कि वहाँ पे जो है यू हैव दिस इंट्रिकेसी, जो आप फिनेस अचीव करना चाहते हो इन योर वर्क, you can get that thing on murals, which is a controlled environment, to be honest. So yes, a lot of studios have my graffiti right now. Red Bull के जैसे events वगैरह हो गए, वहाँ पे hip hop के events हो गए, so I am representing graffiti over there. Basically अभी हमने भी idea pull up किया था, like हमें भी graffiti करवानी है। Exactly. यार फैजान, please do यार। Always there, still doing it. Still doing it। अच्छा, इंटरनेशनली कोई अपना कोई मतलब या कोई फेवरेट वॉल? फर्स्ट वॉल तो या बता दी, फेवरेट वॉल यार जो मतलब आज तक कि नहीं यार दिस इज द प्लेस आई वांट टू डू, और ये कर चुका हूँ, और अगला कोई है एक बड़ा सा दिमाग में। टू बी ऑनेस्ट, हमेशा जो मेरी फेवरेट वॉल होती है वो मेरी लास्ट वॉल होती है। आई डोंट नो व्हाई, हमेशा जो होती है। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम पेंटिंग दिस लाइट रिएक्टिव ग्राफिटी, एंड दैट इज what I see as like my favorite one right now. Right now. Other than that, there have been like a lot of artworks. I have done this one piece called Sinless. I did that back in July 2013. It was a heaven piece, and that was something that was very interesting for me, and I still count that as something that, yaar, I would like to do this again. Same. I did not get a chance to do heaven specifically after that, but बहुत सारी walls की, around like 200-250 walls. I haven't even lost count now. भाई सही है, इतना कर लिया है कि internationally as well, yeah, in UAE and in Saudi. Nice. I have done graffiti over there. I have represented Pakistan itself, और उसके साथ जो वहाँ की local community थी, they have been super supportive. Nice. They were so welcoming about this thing coming from Pakistan itself. और जैसा तने बात की कि यहाँ की जो हिप हॉप कल्चर है उसका फ्लेवर और उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है
as compared to the rest of the world, or the world is appreciating that. We have like a lot of artists who have gone from here. B-Boy Carbon की हम बात करें, Shady himself has been out of the country. वहाँ पे उसको एक बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स मिला है चीज़ों का. सो प्रॉब्ली जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके अंदर जो है एक ट्रेनिंग का एलिमेंट जो है वो शामिल हो गया है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी इटसेल्फ. लोग आप लोगों को खुद गाइड करते हैं, अप्रोच करते हैं, सपोर्ट करते हैं. बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, और अगर आप उनसे कुछ भी whatever you want to ask about life, about anything in general, to be honest, other than your even art form, so they would be very welcoming about it. लाइक इन लोकल पाकिस्तान में अगर बात करें तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस हुई ग्राफिटी जब आप स्ट्रीट पे करते थे? ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस, लोगों बोलते थे. एक सवाल ऐड करते हैं सी के अंदर ही, कभी पुलिस वालों ने पकड़ा? नहीं. हाँ, पुलिस वालों ने पकड़ा, पुलिस वालों ने कहा स्टेशन चलो, आओ पेंट करके आते हैं. I hope it's real कि तुमने पुलिस स्टेशन के अंदर ग्राफिटी. What happened was that I was painting this piece called as Peace Islam. All right, it's a multilingual ambigram graffiti, right? It starts, if you read it from left hand to right hand, it would be like PEACE. And when you read it from right hand to left hand, it would be Arabic calligraphy with Alif, Sin, Lam, Alif, Mim. Nice. So that's one piece I want to do again probably sometime. But I was painting this piece, and this was back in like what, 2009. Oh. Right? And that is when these police guys came up and they asked me, what are you making? And I said, I'm making this. They said, finish this up, come over to the station, you have a wall to paint over there. Nice. I went over there, I painted them a wall as a gesture of thanks that they appreciated it rather That's than so anything. nice of them, yeah. So yeah, that's how I have been with the police. And so yeah, I have been doing things that are not really right, and I cannot quote them here. Right? That's so cool, yeah. But no, I did not do them. सही है. चलो यार, ये अच्छा है. अभी वो लव टू गो टू देयर थाना तो जाना चाहिए. अच्छा, बाय द वे हमने फिल्म्स में भी देखा मोस्टली बहुत से जो जेल में जाते हैं वो कुछ ना कुछ वॉल पे कर रहे होते हैं. वो तारीखें काट रहे होते हैं, वो वाला नहीं है ये. समझ आए इंसान के बच्चे में जो वो पत्थरों से करते हैं, पता नहीं स्टील से करते हैं, फोक से. वो तो तारीखें अलग है. But still, that means a lot. Sorry, but अगर कभी Graffiti, मौका no, graffiti is all about, leaving a memory. At a place. You scratch it, you name it, you do anything about it. Nice. सही है, मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ. It's a memory. आई थिंक ये जो ग्राफिटी, और अगर देखी जाए बात ये देखो, चलो ग्राफिटी हो गया. अगर if you go back in time, and in the ancient times, what people used to art through walls. या Hieroglyphs. Even as a child, जब पैदा होता है, जब उसके हाथ में पहली दफा क्रेयॉन आता है, वो दीवार पे ही जाता है. And that's all that we are. Oh yeah, बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ. ठीक है, तो it's all about letting your inner child staying alive, and that's all that we are doing. यार बच्चे कलाबाजियाँ खा रहे होते हैं, we still B-boy. आपका स्टार्ट ही वहीं से हो जाता है. It's like that. प्रोफेशनल बच्चे मुंह से कभी नहीं बोलते कि मुझे खाना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए. They cry about it, they make a sound. Right? So hip hop culture is all coming up, bringing up the qualities of your childhood. So it's all about your inner soul, that inner child that's there, and that's gonna live. अच्छा, अभी कल्चर में ग्राफिटी आर्टिस्ट मतलब यंगस्टर्स को आप देख रहे हैं कि मतलब कोई if you know like they're doing some really good graffiti के यार ये कम्युनिटी में इस तरह से काम चल रहा है. यार recent years के अंदर कर्ली came up. अच्छा, I'll start from the OGs जहाँ पे हमारे पास नील होता था, सनकी होता था. These were the guys who were like painting like crazy over Karachi. और they were like proper street artists. वो नहीं केयर करते थे कि वो इंटरनल काम कर रहे हैं, वो रिस्क पे हैं, या वो पुलिस के साथ उनका कोई पंगा है. They painted the streets like anything. And they were like major inspirations for me as well too. क्योंकि as an artist you see other senior artists that are growing. और आप फिर you follow the trend. So that helped me become what I am today. अगर आज मैं if I go internationally and I have the confidence कि जी I go to a street and without any sort of legal protection or anything, I just start painting and I come back safe. So that confidence, that seeds somewhere, and that seed was sown by the people here, the local people जो ये काम कर रहे थे. न्यू कल्चर के अंदर अब जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, they have a history
कि यार मुझसे पहले ये लोग करके जा चुके हैं, दीज आर द पीपल हु हैव डन दीज थिंग्स, अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इसके अलावा कुछ करना है। तो द सेम थिंग जो पाकिस्तानी हिप हॉप कम्युनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर लेके आई, एक फ्लेवर, वो फ्लेवर ये यंगस्टर्स अब लेके आ रहे हैं। दैट इज व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। बी एट लाइक अगर आप ब्रेकिंग की बात करें, बी एट आप इसकी बात करें ग्राफिटी की, I mean, I got exposed to something called as projection mapping recently. क्या होता है? It's like fusing the lights, the lasers, fusing imagery, moving pictures with a static artwork, and it looks super beautiful. So that is something that I have learned from this new generation, and along with that, now I am practicing light reactive graffiti, which is like if you change the ambient light of the room, the colors of the graffiti, the elements of the graffiti would change themselves. They would even like, I can make up images. Yeah, I can make an eye open and close with the change of light. Okay. Nice. Right? You can now depict movement through this thing. Same. Very nice. अच्छा, लाइक सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट डालती है ग्राफिटी? लाइक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता होगा लोगों को शायद, लेकिन एक नेगेटिव साइड भी। नहीं, सिर्फ ग्राफिटी क्या, मतलब व्हाट इफ यू सी वॉल चॉकिंग फॉर मार्केटिंग, अगर तुम देखा जाए तो ये जो बताता है बेसिकली वैल्यूज़ और मोरालिटी पे बात करता है व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप ग्राफिटी। इज़ फार वे बेटर बिल्डिंग अ नैरेटिव रेदर देन वेस्टिंग टाइम के आपको मर्दाना कमज़ोरी है। तो कि दिस इज़ अ सेल्फ ऑफ एक्सप्रेशन, और एक ये चीज़ है, आई नो आई एम बीइंग फनी एंड हिलेरियस, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट इज़ द रियलिटी। इफ़ यू गो थ्रू वॉल्स, आप कराची छोड़ो, बलोच के लिए जा रहे हो, सही बलोचिस्तान, and you see there's a beautiful mountain, ऊपर एक दीवार है, सही है, I kid you not, हकीम बंगाली साहब is there, he's been chalked down। मैं परेशान हूँ कि वह बंदा कौन गया है, और उसने नंबर भी लिखा, मतलब उसके कॉन्फिडेंस लेवल की दाद है। आप एक ऐसी फॉल मार्केटिंग कर रहे हो, और आप इट्स देयर ऑन द, आप जा रहे हो ब्यूटीफुल सीनरी, एंड देयर यू सी दिस ह्यूमनली थिंग। फार वे बेटर अगर मैं वहाँ देखूँ कि यार एक अच्छा कुछ मुझे कोई ग्राफिटी दिख रहा है, मेरे को कि बहुत देयर टोन्स ऑफ कलर्स, ब्यूटी इन इट, लाइक वो शिट जस्ट लुक्स गुड, बंदा कोई पहाड़ गया तो समथिंग मीनिंगफुल, महबूब आपके कदमों में, लाइक सीरियसली यार, मतलब वी आर सो डन विद दैट। ऐसा ही है। नाउ आई एम टेस्टिंग वाटर्स टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब जो माइंडसेट है ना सोसाइटी का, वो बिल्कुल चेंज हो गया ग्राफिटी को लेके। उस वक्त नोबडी इवन न्यू हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ठीक है, व्हाट ग्राफिटी इज, जानना तो बहुत दूर की बात है, या इसकी हिस्ट्री या इसके इम्पैक्ट को गेज करना वो एक बहुत अलग बात है, क्योंकि यार अच्छा ये दीवारों पे जो करते हैं इसे ग्राफिटी कहते हैं, ग्राफिटी कहते हैं, रिएक्शन होता है, ओह अच्छा ग्राफिटी कहते हैं, हां जिराफ, क्या ग्राफिक ग्राफिक कंटेंट बना रहे हो, ग्राफिक कंटेंट है, लेकिन ग्रू शुक्र है, अच्छा लगा, शुक्र है। सो नाउ अब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हो गई है। इम्पैक्ट अब ये आता है यार कि आपको अगर किसी भी जगह का एक मूड सेट करना है, यू नीड विजुअल्स ओवर देयर, ठीक है, यू नीड विजुअल्स। अब आप उसको ग्राफिटी के थ्रू क्रिएट करें, आप उसे फ्रेम्स के थ्रू क्रिएट करें, बट ग्राफिटी का जो एक इम्पैक्ट होता है ना, इट्स लाइक कि एक फ्रेम के अंदर यू सी थिंग्स आर लिमिटेड, थिंग्स आर बाउंड, थिंग्स आर फाइनाइट। ग्राफिटी इज लाइक एंडलेस, ठीक है, नो बाउंड्री, जैसे म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं है। एग्जैक्टली, सो यू डोंट फाइंड एजेस ओवर देयर, उसके अंदर जो यू कैन गो इन्फिनिट। नाइस, ब्रिलियंट आंसर। तो दिस इज व्हाट मेक्स सेंस कि यार क्यों ज़रूरत है, एंड देयर इट्स एन इम्पैक्ट। अच्छा, इसी के साथ ज़रूरत तो है ऑब्वियसली, बट फैमिली सपोर्ट, इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, ये एक बड़ा। आप आर्टिस्ट हैं, नहीं फैमिली सपोर्ट की बात कर कैसे सकते हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये बात? क्या होता है ये तो हर आपने ये सोची भी कैसे? सोची क्योंकि हमने फील करा। नहीं, just like every other artist, my family is very supportive for this art form. They have been treating me like a diamond since childhood. और हमेशा उन्होंने इतना सपोर्ट किया, they were like always have my back and everything. बट मेरा एक सवाल है, जब हम पैसा बनाने लग जाते हैं अपने आर्ट से, तब फैमिली कहती है बहुत अच्छा काम। मतलब मैं एक व्लॉग देख रहा था, लाइक सीरियसली, आप शायद जानते होंगे, वो एक वाइटी वैम्पायर बच्चा है, तो वो यूट्यूब पे 8 साल से एक व्लॉग बना रहा है। तो उसने ना अभी घर खरीदा माशाल्लाह से, अपना व्लॉग की जर्नी बताई उसने कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया।
तो उसकी मदर से पूछा कि अम्मी अब मैंने अपना पर्सनल घर खरीद लिया यूट्यूब के पैसों से, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ, हमें उस टाइम पता नहीं था कि इसमें इतना पैसा होगा, लेकिन यार माशाल्लाह मतलब विशेस वगैरह देने लगी उसकी माँ। लेकिन वो पॉइंट मुझे क्लिक कर गया कि हमें पता नहीं था। यार आप करने तो दो, एटलीस्ट कुछ कर रहा है। नहीं ना, वही ना कि हर बार माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है एक मेजर रिस्क ले, ना कि वो इस तरह इस चीज़ में चला जाए कि वो वापस ही ना आ सके। सो एवरी बिकॉज एक मेच्योरिटी ऑफ एज पे आफ्टर 50s और 40s दे नो, बिकॉज दे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड, बट वो थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा भूल जाते हैं कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग फास्ट, और थोड़ा सा ना हर उस जनरेशन के हिसाब से वो दुनिया बन इन्वॉल्व हो रही होती है। मतलब अगर आप अब इस साल के इस जनरेशन के बच्चे देखो, द वे दे आर वे अहेड ऑफ अस राइट नाउ in terms of technology, in terms of usage of internet, in terms of research, in terms of बहुत सी चीज़ें हैं। जब हम छोटे थे तो हम लोग यही बातें सुना करते थे कि हम लोग ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी में, बट आज हम ये बातें कर रहे हैं कि देयर इज अ होल डिफरेंट जनरेशन आउट देयर, और वो उनके स्किल्स के अंदर बहुत डिफरेंस है। द थिंग इज के एट दैट पॉइंट इन टाइम चेंज या अडेप्टेबिलिटी इसको हम लोग समझते हैं, हमारी जनरेशन फिर भी समझती है कि यार देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू चेंज विद द टाइम। पुराने ज़माने में एक स्टर्ननेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, एक स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, रूल फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिसके और बेसलेस रूल्स टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? यू कैन चूज योर ओन थिंग्स, मतलब लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स। सो इट्स नो बिगी नाउ, नॉट एनीमोर। in fact it's like the world today is made of artists now. Everybody is a photographer, everybody is a content creator, every single person, everyone is and they are doing it. इसी के साथ मुझे एक बात याद है कि मेरे फादर मुझे रिसेंट टाइम पे ना 2-4 दिन पहले की बात है, तो अभी ड्वेन का पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, मिकाइल का हुआ, तो मेरे फादर ने मुझे बोला ये लोग कौन है, क्या करते हैं? मैंने कहा ये बी बॉइंग है। अब मुझे उनको 1 घंटा ना प्रोसेस हुआ उनको समझाने में बी बॉइंग होता है क्या है, तो विच इज़ मतलब उनके माइंड में एक चीज़ आई कि अच्छा ये भी हो रहा है, जो होता भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था, तो विच इज़ गुड यार कि we will have the sense of idea कि भाई ये क्या ब्रेकिंग क्या होती है, which is good. ऐसे ही है, people are participating, people have something different to think about, which is actually very positive. I mean, आप निकल जाओ यार 2 मिनट के लिए अपने जहन से कि पेट्रोल 300 रुपये का हो गया है और बाकी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, वो तो शुरू से हो रही हैं, वो होती रहेंगी, एंड प्रॉब्ली जो हालात हो गए हैं तो इट्स गोइंग अनप्रेसिडेंटेड। जो बात है, तो I don't know what's going to happen, but for that moment, within that moment of mesmerization, when you see an artwork, it's just this morning, I was making this artwork for my friend, and he was like sleeping in his room, right? And I was just painting, and when I finished the painting, he woke up and he came up to see that wall and he smiled. And that smile meant the purpose of my graffiti. For 1 second, you forget everything, you get lost in your present moment, and you appreciate it. That's one thing that बहुत I can simple. create. Got That's you. simple as that. अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर लाइक जैसे वॉल चॉकिंग की अभी हम बात कर रहे थे, इसको हम खत्म कैसे, गवर्नमेंट का इनपुट होना चाहिए, लाइक hire as many graffiti artists as much as you can. That's what we can do with that. हमारी Or at least utilize the graffiti artists for your marketing. नाइस। Yes. ये बहुत Very अच्छा okay, very okay. मैंने जवाब तो गलत दिया, sorry about ये that. बहुत गलत क्वेश्चन है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? नहीं, आइडियाज दो ना यार, तुम भी दो। हाँ नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। वॉइस प्लेड वेरी वेल। नाइस। अच्छा, लाइक एज अ प्रोफेशन आप ऑब्वियसली आप ग्राफिटी आर्ट पे अभी आप इसको प्रोफेशनली लेके चले, लेकिन बैक हिस्ट्री में आप कहाँ पे, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे? Okay, so like what happened was that my graffiti journey, it had a little bit of education break, you can say. What I was doing, I started in 2006. I was doing my intermediate, then I was doing my doctorate of pharmacy, then I was doing my MBA, and alongside all of this, I was teaching. I was doing jobs in pharmaceuticals as well. So it was like a lot of things. See, I told you, like those two people that were like starting initially, Faizan and Rebel, two different people. Both of them have their own work cut out for them. दोनों ने अपने अपने काम पूरे करने हैं, उसने पढ़ना भी है और इसने पेंट भी करना है, इसने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करने हैं, इसने वीडियोस भी बनानी है, इसने ग्राफिक डिजाइनिंग भी खुद ही अपनी सीखनी है क्योंकि कोई और करने वाला नहीं है, इसने फोटोग्राफी भी सीखनी है क्योंकि कोई और करके नहीं देखा है, जबकि यहाँ पे पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है, फाइनेंसेस भी पूरे करने हैं, you have to do everything all together. सही है। So it's overwhelming, but
it's the rush, it's the adrenaline that keeps it going, to be honest. जो थोड़ी बहुत भी appreciation अगर किसी artwork पे किसी से मिलती है, it gives us a big heart. उससे बहुत खुशी मिलती है. सही है. So initially 2012, 13, 14, 15 as graffiti अगर मैं बात करूँ तो 15 तक I have earned a lot from it. There were commercials, there were cafes opening up, people were having this thing. Again, the corporate world was getting to know कि यहाँ इस तरीके का artwork हो सकता है, यहाँ artists मौजूद हैं और उनकी worth भी है, and they recognize that. हाँ ठीक है, हर तरह से business में जो problems होते हैं देर सवेर, you know, so clients, they do that, right? Clients will be clients. Clients will be clients in the end of the day. Right, but Client is always right. They recognized the value. They gave opportunities. They gave finances to the artists that they grew into people that they are today. A lot of graffiti artists, they live on their own. Yeah. I like doing my job. I like my work. And I like doing this side by side. Right? So it's always that way. If you take my interview from 2013, that says the same thing. Graffiti will be my passion. And pharmacy will be my profession. So 10 years ago, I was very clear about how I had to do this. And I was continuously putting in effort. It was all about the effort, day in and day out. I mean, still, if you ask me how much hours do I sleep, it's 3 hours, 4 hours that I get to sleep. No more than that. Alongside that, I'm traveling a lot. Alongside that, I have been, you know, just living life to the fullest. There's plenty of time to sleep when we die. Yeah. क्या बात है भाई, क्या बात है. तो काम करते रहो. लगे रहना चाहिए. नहीं, that's a good moment. अच्छा, what about like आपका competition? Sorry आता भाई. नहीं बोलो. मैं इस नहीं सवाल खत्म हो गया, जवाब पे बस ऐड कर रहा था, लेकिन हो चुका है. आगे बदलते हैं. खैर, graffiti competition like आप करवाते रहे हैं. Okay, graffiti competitions, not competitions exactly, jams. Okay. Graffiti art movement. Jams are basically जिस तरह से breakdancing के jams होते हैं, all the b-boys gather at a spot, they perform their thing, they do their styles and everything. तो इसी तरीके से graffiti भी jams होते हैं, rap के concerts होते हैं इसी तरीके से. तो hip hop culture के अंदर ये एक exposure का एक method है जिसके अंदर आप तमाम artists एक जगह के ऊपर जमा होते हैं and you express yourselves. तो ग्राफिटी जैम्स मैं बिल्कुल करवाया करता था एंड देयर वाज अ होल जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट. आप रावी को उठाएं, आप हाईटिफ को उठाएं, आप मिर्च को उठाएं, ठीक है. सो दैट वाज लाइक एट दैट पॉइंट इन टाइम जो हम लोग कर रहे थे, मैं, नील, सनकी, उसको फॉलो करने वाले, दीज वर द इनिशियल पीपल. आप अयान को उठाएं, अयान रिलीज नाउ इन लाइक यूएस. तो दोज गाइज वर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग over here in Karachi at that point in time. और काफ़ी सारे corporate projects भी सब कर रहे थे. मतलब मिल बांट के उस वक्त भी graffiti community के अंदर 18-20 graffiti artists जो है प्रॉपर होते थे 13-14 के अंदर, और वो एक्चुअली कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काम कर रहे थे. अब बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर जो हमारी आर्टिस्ट के साथ किया जाता है, दैट्स कैपिटलाइजेशन एंड कैनिबलाइजेशन. तो बहुत सारी कंपनीज़ ने भी किया, आई वोंट टेक द नेम्स, बट बहुत सारी कंपनीज़ ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, इंडिविजुअल्स ने किया. सो या वी वर कैनिबलाइज्ड टू, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड. एंड टुडे आज आपको आर्टवर्क यू विल फाइंड इट इन every reputable cafe, in every reputable restaurant, in every reputable studio. We are the people who are giving walls the flavor that they have. अच्छा, like अभी आप एज अ सोलो आर्टिस्ट मतलब करते हैं या आपकी एक टीम है like? Okay, so right now I used to have a team initially, but abhi recently all of the people have grown up and some of them have stayed within the game. Some of them have gone out, new people have come in. So yeah, I work with a lot of people, as much people as I can work with, either to learn something or to teach something. So yeah. Right? So that would add to, my work as well. Okay, when I incorporate my work with somebody else, is like, abhi recently I worked with this guy named Mukhtalif. Okay? Mukhtalif. Yeah, his name is Mukhtalif and I'm Rebel. Like, that's Mukhtalif Rebel. Mukhtalif Rebel. That's the video that I have on Instagram, right? So Mukhtalif Rebel, we worked together, and like what I did was something like this traditional, this traditional hip hop graffiti, and we combined it with contemporary calligraphy. And the effect turned out to be amazing. Nice. Amazing. Nice. Very nice. So this fusion of things, right? This is what gives you, that's what keeps you fresh, what you call it in hip hop language. You stay fresh. You stay fresh. By working with people.
Collaborations, yeah. Right. It keeps us going. That's true. Agreed. So yeah, I have been working with a lot of people, a lot of artists. I have worked a lot, especially I'd like to mention here Neil Uchong. I have worked a lot with him. I'd like to mention Ramiz Arif himself, who used to How be you connected with Neil? How did I connect with Neil? I used to be present around BBRC, if you remember, Body Beat Recreational Center. And that's where Neil and Vernon used to teach parkour and free running. And I was like, I used to fangirl over them, like, oh God, these guys are so awesome. And, I want to flip like them and I want to move like them and I want to do things like them. So that's where I found them. Nice. And I was painting. They recognized me. They found me. Okay, ये भी एक पागल है जो हमारी तरह पागलपना कर रहा है. इसको भी बुला लो अपने पागल खाने में. So we started with that, and they helped me with a lot of things other than just graffiti and everything. I mean, मैंने और नील ने corporate काम बहुत ज़्यादा किया है. We have traveled the country painting together. Oh, nice. And we did this project in Lahore Expo Center के अंदर live graffiti at a fashion show. We did that, and it was a whole journey with him. Same. And along with Ramiz Arif, I have done a lot of other projects. So this is what's the best part about it. You get to meet new people. You experience their art styles, and you have a whole different journey with them. Yeah, yeah. Yeah, I remember you being with Ramiz Arif most of the time. You guys spend a lot of time. I think he's completely a tattoo artist now. Now, yes. He used to following be his a passion. textile designer. He Yeah. used to be a graffiti artist. And lecturer too. He used to be a lecturer as well. Yes. Genius. I mean, he's the guy who instilled all of the art history, all of the art knowledge into me. Oh. The time that you were talking about, I mean, I know you remember me seeing like Ramesh bhai ke saath puri raat meri conversations ho rahi hain, and it's all about art. It's all about कि Van Gogh क्या करता था, Michelangelo का art style क्या था, modern art forms किस तरफ चल रही हैं. So he was the guy, क्योंकि मेरा medical background था, I was becoming a doctor. I had no formal education of arts, but training under these people was, I would say, an asset that I can never give up on. So the community itself has a role in, shaping me what I am today. Passing it on. Yeah. It's all about that. So that's what I try to do as well. Amazing. Incredible journey, man. So yeah, it has been like that. अच्छा, ग्राफिटी लाइक हम देख सकते हैं अभी डिजिटल फॉर्म में, लाइक गेम्स में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में एज अ मेटावर्स NFTs अब इसमें कन्वर्ट हो रही है. तो व्हाट डू यू सी के फ्यूचर ऑफ लाइक ग्राफिटी का क्या मतलब आप देखते हैं Is it इन अ डिजिटल फॉर्म? I think let's go to the meta world पे बात करते हैं थोड़ी. Already you have platforms in which you have controllers that act as spray cans, right? You must have seen those videos on the internet. VR, right? Yeah, VR and augmented reality specifically. And you can, you have actually converted this whole thing into a digital experience now. And, converting this into a digital experience means now you can add a whole new dimension to it. Graffiti itself is something which is, number one, 2D, we create illusions to make it look like 3D or something 3D in a 2D world. But Metaverse is not 2D. Metaverse is not 3D. Metaverse is 4D. 4D. Okay. Right? And within those 4 dimensions, I mean, right now you should follow the work of Bond. Right? Bond is an artist and he creates artwork which is like an artwork on a wall, but technically it is a QR code, and if you point your phone to it, Oh, nice. it would like start melting away. The elements would grow, they would shrink, they would change colors. So that would be like augmented reality. Same. I mean, your whole perception of reality is going to change when this type of graffiti comes in. So there is like a lot of work that needs to be done that the local market has not even seen. ठीक है. So the thing that people are doing today, आज स्टूडियोज में जो आपको मिल रहा है, ये वो काम है जो ग्राफिटी आर्टिस्ट आज से 15 साल पहले करते थे. Exactly. आज जो हो रहा है, अगेन जो हम बात कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया से 20 साल पीछे है, तो भैया यहाँ पे भी 20 साल नहीं, बहुत ज़्यादा. ठीक है. राइट, सही है. डेफिनेटली. तो दैट्स द थिंग कि यार मेटावर्स के अंदर इसका जो स्पेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. इट वुड बी विजुअल एक्सपीरियंसेस, it would be visual journeys through time. So it would be something, something
amazing. NFTs के ऊपर graffiti artists is probably सबसे ज़्यादा कमाए. What's happening in NFTs is the fact that there are variations of a similar artwork, and what graffiti artists do, they take a name and they write it their whole lives. They know how to create variations. Right? Exactly. सही है. तो NFTs are something, a graffiti artist can, on the side, they can just do this thing. चलो. So the future for graffiti is pretty nice. It's pretty interesting, and it's something to look forward to. Same. Along with this, artificial intelligence is playing its role. You have seen Midjourney doing its thing. Kyber.ai. Right? So these things are gonna change the game completely, and they are gonna, they are gonna give something that we cannot even put into words right now. सही है. It's like that. समझ गया. तो अब तो यही है कि बिल्कुल लाइक यू नाउ वट एवर दैट इज़ इन द माइंड. अब जो एग्जीक्यूशन मोटर्स जो बेसिकली अब आई हैं कि इट एक्चुअली गिविंग यू द एग्जैक्ट आइडिया दैट यू वर थिंकिंग. तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्किल एरर अब कम हो गया. अदर देन द थिंग दैट यू ट्राइंग टू प्रॉम्प्ट इनटू इट, वहाँ पे मसला हो सकता है. लेकिन अगर इफ़ यू हैव अ रियली गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो सिंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नाउ अ स्किल, तो यू गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स. तो ये तो है. Like we would love to know since you experienced so much throughout Pakistan, UAE, but you've been like that you just really had a 3-month experience at Saudi. We would love to know what was the transformation. We were actually talking about the first place कि हम लोग जो बोले थे कि we see a huge change in you. So we would love to know कि थोड़ा experience क्या किया वहाँ पे कि now you're coming back to Pakistan, doing artwork like crazy और एक And international graffiti communities. Yes. All right. So the transformation that happened through this journey that I had, or specifically the exposure that I have had, to be honest, I have seen a lot of artists at work, and I have just learned one thing from them, be it like any form of art, it doesn't matter. What matters is the fact that they practice the same thing 1,000 times, a gazillion times if they want to, until they make it perfect. So this striving for perfection specifically is something that was amplified into this tour that I had. It was basically I met Side 1, Isbez 5, Joker, Batalo, all of these from the Saudi community. Then I have El Seed on board as well, mentoring me. And then, the local artists, Ramiz Arif and Neil Uchong, they are still there. So with all of this training and all of this exposure, I got to know that, this is something that you got to get better with practice, and you got to practice it every day. Not because the world wants to see it, not because, you want to make a masterpiece or something. It's just that it makes you feel happy. It makes you feel good. And it makes everybody else around you feel good. More like a sense of purpose, fulfilling, Quite fulfilling. In fact, like I consider that this is a gift given to me, and I should utilize it the best way possible. That's sweet. That's sweet, man. That's a beautiful vision. क्या? ये सवाल. अच्छा, art materials and the stay of Montana. Story of Montana cans. I talked about it. That, Montana cans are specifically paints that are made by graffiti artists themselves. So this company, they hire a lot of graffiti artists to specifically make colors of their own choice. Colors of their own choice, like whatever shades or variants they wanna put up. There are special series that are given out by the name of graffiti artists. Those are special cans, limited edition colors specifically, that come out with the name of the artist as well. So Montana's has been something that as a beginner graffiti artist, I always dreamt of using. Again, one of those dreams, right? So I got to these places, and I got this opportunity to actually use them. It was very fulfilling. Again, the sense of purpose that you find, and then the effect that comes with it, like the can control that you can have, the spray control, the pressure and everything. It makes artworks stand out completely differently. So it was something that I have always been looking forward to. So that's checked off my bucket list. And in fact, now I can offer that to my clients as well. I can import those cans, and I can probably use them here now. So yeah, that's something that I've considered as growth. So and I love using them. Yeah. I have loved using them.
I still have a few at my home. I smuggled them. Smuggled. नाइस इसमें ये है कि जितने भी लड़के हैं ठीक है ना उनके लिए जो है जैसे वो रेड है वो रेड है 10 लड़कों से पूछे रेड है वो किसी लड़की को बुला के बोलो कि वो बोलेगी यार कोई अलग से ही नाम लेगी ये जो है वायोलेट वगैरह कह के किस तरीके का है हाँ. so you being a graffiti artist and being a male how do you Perceive colors. because with males everything is either red, blue, green or orange or yellow. That's it. Yeah, it's just that because that's all that we have in Pakistan. I mean, spray cans, we don't have a lot of colors. It's just red, green, blue. So kind of like makes it easier. 1, 2, I can make gradients so that, you know, I can incorporate shades, different shades or layers over it. Like basic color theory, you mix red with any color, blue color, and you make a purple or something like that. So we mix different concentrations with spray cans and everything. But when it comes down to Montana cans specifically, you have colors like poison ivy. You have colors like beast. And beast is a very sharp pink. It's a very beautiful pink. So yeah, so the whole feminine color theory fails here. अच्छा, Right, that's so a it's- fact actually. By मतलब the कोई way, fact आया हमारे shout सामने. out to Farhad. For that Farhad in the house. Yeah. उनका एक अच्छा सवाल था. बहुत interesting question है. I will it myself. आ जाओ भाई इधर ही आ जाओ. Nice. Love this energy. But Amazing. अच्छा खैर थोड़ा सा Yeah. fun fact. फन फैक्ट आते आते लेकिन यार मैं उसमें हमने जो पीछे था एक ट्रांसफॉर्मेशन भी तो वी वुड लव टू नो कि भाई व्हाट ट्रांसफॉर्म फॉर यू नाउ इन टर्म्स ऑफ यू नो मूविंग लिविंग द फ्यूचर लाइफ दैट्स गोना कम टू यू ऑब्वियसली और प्लस यू नो कुछ रूल्स कुछ क्या है क्या हु इज द रेबल 2.0 Who's Rebel 2.0? Very good question. Okay, so the thing is that as a beginner graffiti artist, I always used to think that, you know, I'm just starting out. I don't have any formal education. So that, you know, always puts you one step back, right? But still, what would be the guy who would know all about arts or who would know how to execute things, how to imagine things and, you know, everything from the skill to the flow to, you know, being there, being out there on the walls and actually doing corporate work. It all used to be a dream again. And through all of this journey, all I have learned is just to enjoy the process. It's going to be tough. It's going to be difficult. It's not always going to be a piece of cake. You can have a very difficult wall to work with, a wall that is absorbing a lot of paint or probably your can's expired and, you know, they're not throwing the right flow or something like that. So you can have little problems. You can have major problems like there's a strike going on in the city or there's a protest. There's a lot of traffic. There are no roads. So that's daily. But then again, you have to fight through all of it and still keep your skills alive. You gotta keep practicing. You gotta keep practicing. The more you practice, the more you get better. अभी भी practice चल रही है यार. Nah. I'm loving it. Just you know, मजा आता है. Nice. Yeah. It just makes me happy. It just makes me feel good. It's just all about that. I mean, why do you beatbox? Exactly. Why are you doing this interview? Doing this Because in the you, first place. you love Feeling listening to it. stories. और एक यही है कि हाँ ना वी ऑलवेज वांट टू यू नो एक अगर इफ वी टॉक अबाउट बीइंग अ क्रिएटिव तो ये होता है कि देयर शुड बी एन इम्पैक्ट इनटू द सोसाइटी यू नो विद समथिंग न्यू True. तो या People, they may understand it, they may not understand it, but it's not for them. It's more for us. It's more for what we are doing. If you like it, very good. If you don't, Be you part can of it. find another artist to like. Yeah. At the वो end of the simple day, है. you are coming to us. सही है दैट इज व्हाट इट इज अच्छा भाई टॉप 5 बिरयानी. ओरे ओरे खाने यार कराची. चलो हाँ और बाय द वे आपने तो मतलब ऑब्वियसली ग्राफिटी करते हुए स्ट्रीट्स में आपने काम किया तो बिरयानी तो मस्ट होती नहीं तो होगी जरूरी है लाइक. कराची बिरयानी Biryani is love. Biryani is Pakistan. Biryani is amazing. पाकिस्तान Biryani is a बिरयानी culture itself. कराची ये देखें यहाँ पे कराची. यहाँ पे लड़ाई हो ब्रो जाएगी. कराची वैसे जो बात है, कराची की बिरयानी. कराची की बिरयानी I agree. ठीक है. टॉप 5 Top गिव अस अ मैं टॉप 5 फटरी डालना चाहता हूँ. मुझे भी जाना है कुछ दिन बाद. इधर भी जा. टू लेट ठीक है, सही है. हाँ, ठीक है. उतना हमारे जोर है. वैसे लाहौरी लड़का बैठा हुआ है हमारा. खैर हो गई. अभी तो यहाँ है ना कराची में. ऐसा बताइए गलत रास्ते. नहीं गुड वन यार. वेरी नाइस. जो बात है जो टॉप 5 बिरयानी. टॉप 5 बिरयानी. अच्छा, मुझे पर्सनली जो बहुत पसंद है
Gausia, I would say number 1 के ऊपर. Yeah, ठीक है, good नली choice. बिरयानी, that's top of the list. बहुत recent आई है but बहुत अच्छी है ये. Then second I'd say दरबार. Oh, ठीक है. अच्छा, बिरयानी साइड के my most favorite dish चावलों में is काबली पुलाव from Peshawar. Oh, ठीक very है. nice. तमवानो मोड़ पे there is one. You go and you have it. Okay. And it has like amazing flavor. तालिश देख रहा है. Amazing हाँ. पश्तून flavor है. होए. ठीक है जी. तो I have eaten like a lot, but these are the 3 names that I can have right सही now. है. Nice. Gausia, Darbar and this Kabli Kabli pulao. Kabuli pulao from सही है, Peshawar. Peshawar. अच्छा, Nice. टॉप 5 विश लिस्ट मतलब ऑब्वियसली हर किसी अच्छा इसको लेट्स जस्ट चेंज इनटू द स्मॉल एक सेगमेंट है हमारा, द मैनिफेस्टेशन सेगमेंट. तो लेट्स अच्छा इन द फॉलोइंग 10-5 years या तो in the patterns that we see results of whatever we've been progressing into becoming something that we I think kind of wished for, or maybe we look forward to it. So we would love to know के क्या manifest करना चाहोगे, like what your Okay, dreams that number you one, want to come childhood true. dreams. Yes, Again, childhood dreams. dreams. It's all Right. about dreams, right? When I want to retire, when I'll retire, I would own a Montana spray can outlet. And I would have people coming over. I would be like doing this thing. I mean, this is what they practice over there. I went to the shop. They gave me a paper, a pen like this. They said draw, and I started drawing. And there were like 5-7 different artists. They were doing the same thing. The whole wall was covered with tags and everything. Nice. So I want to open up a shop in Pakistan like that. That's where I want to retire. And before that, I want to create a place called Hobby Inc. Hobby Inc. would be a place where people like how we started. We had no equipment. We had no studios. We had streets, rough as anything. So I want to create a place called Hobby Inc. where people can come over, enjoy all of their hobbies with the best professional equipment they have, and probably Very nice. if it's free, the better. it Very is. nice. Good So idea. that's And what- very costly. What bro, there are a lot of sponsors to be honest. Yes. definitely. And we would love to to come to the inauguration for your For Yeah. sure, shops you and guys everything. will be the बस सही है, बस grand maestros over there. promotion करेंगे. And last of your favorite question. Yeah, नहीं अच्छा उससे पहले एक अच्छा उससे पहले उससे पहले करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान oh serious किस हवाले से? जो चल रहा है, महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन, बल्कि एबनॉर्मल इन्फ्लेशन कह लो अब तो. इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम्स, चीजें. I think everything is related to the finance. So yeah. बड़े मजे की प्रेजेंटेशन चल रही थी. I'm sorry, I'm coming from off topic, but हाँ. कल एक बड़ी मजे की प्रेजेंटेशन चल रही थी. It was about antimicrobial resistance or something. So वहाँ पे जो टॉपिक था ना, उस टॉपिक के अंदर एक वर्ड था सेल्फ क्रिएटेड डेमन्स. ठीक है. सो वट एवर वी आर फेसिंग टुडे, वी प्लांटेड सीड्स फॉर दैट. Okay. ठीक है. इट्स नॉट टुडे, इट्स नॉट 1 month ago, it's not something Okay. जो हम आज हाँ. कर रहे हैं. ये पिछले हमारा 70 सालों साल से का. बिहेवियर है. सही दिस इज है. आवर बिहेवियर. दिस इज व्हाट वी डू. showing We throw trash out on the streets. We do that. ठीक है. No matter how much the government works, we do that until we change ourselves. This was my message 10 years ago. If you take up my opinion on the same question, was the answer. We did this to ourselves. सही है. Okay. Very nice. Until and unless we take responsibility for what we have done, we cannot change. We will, if we continue with the same behavior, Yeah. we are gonna be even more messed up in very near future. We already are messed up. There is a brain drain going on. Yeah. No intelligent person wants to stay here, work here, because they feel the resistance coming from the society, from the elites. You cannot do business here. There is no political security. There is no legal security when it comes to that. And if a state cannot provide that, what good is a state? Agreed. Nice. Very good summary though. I would summarize it into that we have up, and this is what it is. So अब यही है कि last another question जो है ये Last 1 second last question. अच्छा एक Any suggestions to young talent जो graffiti में आना चाह रहे हैं? I think This is the suggestion that I got from everyone, from the international community, from the local community, everyone related to arts. Just keep painting. Okay. consistency is the सही है. key. Just keep painting. It does not matter what you do, how bad you are doing it, how good you are doing it. Just keep painting. You will get better.
it is all a process. Enjoy the process and keep experimenting new things. चलो इस Nice. podcast के बाद if someone reach you out, तो I hope you help him too. For sure. You have all the cans in the world, including Montana's now. सही है that's how I अदरवाइज be बीट like. बॉक्सिंग स्टाइल में आई थिंक नहीं बस ये एक चीज़ है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बीट बॉक्सिंग that's स्टाइल the- में ओए होए अमार को तो पसंद आ जाएगा यार ये ये उन्होंने खुद ही दे दिया फीडबैक कि ये लव शो मैं करता हूँ इन रिटर्न फॉर यू यहाँ पे दिखेगा तो दिख रहे अमार तो भाई यार इन द एंड वी वुड लव टू नो कि हाउ वाज एक्सपीरियंस विद अस टिल नाउ with EncycloMedia. We would love to know. Kudos to you कि you started all of this thing. You brought all of this community together again, just like Taishi did, just like everybody else. We are all trying to keep the community together still somehow. Yeah. So this is one major initiative. It is very different, and it has been amazing going through the journey of EncycloMedia Hub. Alhamdulillah. It's an amazing venture. Best of luck for this. Thank you. I am here if you want, like, that black wall, not black. We would love to see that, the thing that you discussed about the glowing in the night. Yeah, it's light reactive graffiti. Probably Light we can do reactive that right here, and it would give you a very kick-ass background. ओए होए मतलब वैसी डार्क मेलो वाइब होगी ऊपर पीछे कुछ हो गया ना वैसी कॉस्मोस पसंद है शेफ फराद को तो आई थिंक वी शुड गो फॉर द कॉस्मोस स्टफ यूनिवर्सल टाइप ना गैलेक्सी Trust me, I am all into it. nice I'm glad very you nice मतलब thank you for coming by the way तुम recently अभी आए थे थोड़ा सा अभी रेस्ट में खैर we kind of discussed कि नहीं यार अभी थोड़ा फैमिली टाइम तो है ना ठीक है पर नेक्स्ट वीक तक करते हैं तो we are glad that you're here यार It was a pleasure being here. It was a pleasure being behind the mic after such a long time because I have been really busy with a lot of things with my job and, getting promoted and a lot of the things. But it is crazy good to be back and there is a lot more artwork coming soon. You Inshallah. are not ready. Oh, you are not ready at all. सही है Right? And you're gonna see me killing it just like the old days. Jo man. Hold it 2.0 2.0, bro. Rebel so yeah, thank you and, so much let's wrap up. yeah बिल्कुल ending Maybe Sir, if you want to say नहीं, anything नहीं, in this नहीं, podcast, like it was a very beautiful podcast, our ending with a very good summary. So going back to and thank you once again, Rebel, for coming to the show. Thank you so And much for calling me wrapping up. up with this. So guys, since you might have watched this podcast and you wonder like what kind of elements that we're trying to promote in this EncycloMedia. So this is what it is all about. As promised, as committed. With a new guest, new hope, अच्छा new न्यू गेस्ट बाय द वे expectations. हमारे साथ ही अभी हाँ, ये पॉडकास्ट से खत्म तो हो गया नेक्स्ट this is what it is. We are that fast. So yes Yeah. No time. So thank you everyone and keep watching Allah Hafiz. EncycloMedia Podcast.